Hello, everybody. My name is Mukesh, and from today onwards, I'm going to upload some videos on YouTube, which will be basically concerned with the lecturership exam, RPSC first year. This is partially because I love to teach, and partially because I've seen so many videos on YouTube which actually don't even know how to pronounce words in Hindi. So I thought it a good idea to teach people, or I can say help people, and it's just an experiment. Today's lesson is just an experiment. If it goes well, we'll be studying a lot. So today we are going to see a poem which is named On His Blindness, which is written by John Milton. And today I'll be teaching you just the text of the poem, and all other details will be covered in another video. So I hope you will pay attention and will be benefited from the video. So here we go. First of all, it's a Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnets were generally written for love and emotions, but Milton here uses a Petrarchan sonnet in his own way and makes his own. We call it a Miltonic sonnet, and I will be discussing it in another video. Now we are going to start the poem straight. When I consider how my light is spent, array half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide. Now, the first line, when I consider how my light is spent, here, spending of light is, allusional to the spending of Milton's light, means losing his eyesight. So when he thinks how his light is spent, how his eyesight has gone, जब वो सोचता है कि उसकी eyesight जो चली गई है, अभी उसके half days means अभी अगर अपन उस समय के हिसाब से लगाएं age, तो Milton was around 44 at the time when he went completely blind. तो वो सोचता है कि मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई है अभी, and the world now seems to be very dark and wide. So it is very natural that if somebody has gone blind and he can see nothing, everything will be very dark, and everything will be inapproachable. I mean, he'll not be able to feel the things. He'll not be able to get the things he wants. So the world has become very dark and white for him, and that one talent which is death to hide. Now talent, the use of talent is again mythological or mythological reference to the story, a biblical story, where talent meant a kind of currency. Okay, so there is a story which I am going to tell you in short, that there was a master, वो अपने 3 शिष्यों को कुछ टैलेंट्स देके जाता है, कुछ सिक्के देके जाता है, और 2 शिष्य जो होते हैं वो तो उनको यूज़ करते हैं और उनको बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, एंड देन देयर इज़ अ डिसाइपल जो सोचता है कि उसके पैसे कहीं खर्च ना हो जाएं, उसको ज़मीन में दबा देता है. और जब वो मास्टर वापस आता है तो सब लोग बताते हैं उसको कि क्या हुआ. तो वो मास्टर जो है वो उस सर्वेंट को डांटता है जिसने पैसे छुपा दिए थे. नाउ मिल्टन जो है उस टैलेंट वर्ड को यहाँ पे यूज कर रहा है, और यहाँ पर अपन उस टैलेंट को कंपेयर कर सकते हैं मिल्टन के टैलेंट से. सो ही सेज दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड. नाउ मिल्टन हैड अ टैलेंट एज वेल which is now kind of hidden till he dies, because for a person who is blind, it is very very difficult, if not impossible, to compose poetry, and Milton loved to write poetry. So he thinks that his talent of writing poetry is now hidden till his death, lodged with me useless. Now it is useless because he'll not be able to manifest his thoughts into his poetry.
वो अपनी थॉट्स को अपनी पोइट्री में लिख नहीं पाएगा, ऐसा उसे लगता है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज he composed his most famous poetry after getting blindness, I mean after getting blind. Though my soul more bent to serve therewith my maker and present my true account, although he truly wants to serve therewith means usse means talent se, my maker means God, and present my true account, and he wants to show God that his true worth is not what is presented because of his blindness. Means अंधा हो गया है तो अभी उसकी ट्रू वर्थ जो है वो लोगों के सामने नहीं आ रही है, बट वो चाहता है कि वो अपनी ट्रू वर्थ को लोगों के सामने लेके आए। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डांटने को बोलते हैं, और वही रेफरेंस वापस से आ गई है जो टैलेंट वाली मैंने बताई थी आपको, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे डांटे। मीन्स जब वो मालिक वापस लौटा था तो टैलेंट या जो कॉइन था वो यूज नहीं किया था एक सर्वेंट ने, तो उसने उसको डांटा था। इन द सेम मैनर कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस लौटूं मरने के बाद गॉड के पास तो मुझे डांटे कि तुमने अपने टैलेंट को यूज नहीं किया। नाउ these 6 lines and the following 2 lines present a kind of problem, which is a kind of a culture or pattern of a Petrarchan sonnet, that the beginning or initial 8 lines, which are called an octave, present a problem, and the remaining 6 lines, which are called a sestet, present a solution. Now, so he says, doth God exact day labor? Exact means demand. तो गॉड जो है क्या वो डिमांड करते हैं डे लेबर उन लोगों से, डे की लेबर, मैं अभी हिंदी बता रहा हूँ इसकी, उन लोगों से डे की लेबर, लाइट डिनाइड, जिनको भगवान ने लाइट नहीं दी है, जिनको भगवान ने रोशनी नहीं दी है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या जिन लोगों की लाइट नहीं है, जिन लोगों के पास रोशनी नहीं है, क्या उनको भी रोशनी में काम करना जरूरी है, या वो काम करना जरूरी है जिसके लिए रोशनी जरूरी है? सीधा सीधा रेफरेंस यहाँ पे है कि मिल्टन खुद ये अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान ने जब मुझे लाइट नहीं दी है, भगवान ने जब मेरी रोशनी छीन ली है, तो क्या मुझे वो सब काम करने जरूरी हैं जिनको करने के लिए लाइट या रोशनी की जरूरत है? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब यहाँ पर प्यार से नहीं है, फॉन्डली का मतलब यहाँ पे फुलिशली है। आई फॉन्डली आस्क, आई फुलिशली आस्क, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, आप देख सकते हैं पी कैपिटल भी है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, प्रिवेंट स्टॉप दैट मर्मर फुलिश टॉक, सून रिप्लाइज। But the patience of Milton soon replies to the question. What was the question? The question was a foolish one, and it was कि क्या भगवान को उन लोगों से भी लेबर चाहिए या उन लोगों की भी सर्विसेज चाहिए, डे की सर्विसेज जिनकी लाइट नहीं है। So we are going to study only this much in this video because the length and the size of the video is going to be greater than what I can afford. So that will be all for today. See you in the next video. Goodbye till then.